National salute, salute. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष समागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Order. Jai Shri Gurudev. With the divine blessings of our founder, His Holiness Jagat Guru Padma Bhushana Shri 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 Dr. Bala Gangadhar Natha Mahaswamiji, with special blessings from Shri 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 Dr. Nirmalananda Natha Mahaswamiji, Chief Pontiff Shri Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Math, with warm blessings from Shri Shri Dr. Prakash Nath Swamiji, Managing Director, BGS and SJV Group of Institutions, I welcome you all to the Independence Day celebrations 2020. A famous shloka in the Rig Veda goes like this: Sanga chhadvam, sanga dadvam, sammo manansi janatam, deva bhagam yatha purve, sanjanana upasate. It means, may we march forward with a common goal. May we be open-minded and work together in harmony. May we share our thoughts for integrated wisdom. May we follow the example of our ancestors who achieved higher goals by virtue of being united. A very warm welcome and a very good morning to all my dear students, my staff members, and all the parents who are watching the show from home. Over 350 languages, more than 1,600 dialects, nearly 650 tribes, so many religious and ethnic groups, so much cultural diversity, and yet one country. I feel so proud to be an Indian. With independence, we just did not become free from the British rule. We regained the freedom to be what we are, to live the way we know best. And that freedom has been the hallmark of this great country. It is not a coincidence that India has never invaded any country in her long history. It is just her unwritten mission statement to be a giver and not a taker. She gave the concept of zero to the world, without which math and science would be groping in darkness. The game of chess, algebra, trigonometry. She gave the world the first university, the earliest school of medicine, and 4 religions. She nurtures hundreds of temples, churches, mosques, and gurudwaras. She gave asylum to more than lakhs and lakhs of refugees who fled religious and political persecution. The list is endless and unparalleled. The context of freedom has changed, but the concept of freedom is just as relevant today, or even more so. There is no British rule now, but there are greater ills prevalent in the country, which we should promise to eradicate during our lifetime. Let us strive to make India the best country to live in the world. We seldom get an opportunity to serve the nation literally, like fighting a war in the border, like a soldier. So then how do we serve the country? We can be the best teachers, the best doctors, engineers, agriculturalists, entrepreneurs, photographers, journalists, writers, civil servants, the best of each one that can be. Think of an economy which has a rich primary sector, a strong secondary sector, and a skilled tertiary sector. We would automatically be the best. A software engineer once asked Dr. APJ Abdul Kalam. He used to work
in a multinational company. He said, "How can I contribute to nation building when whatever I do earns profit for another country?" Dr. Kalam did not ask him to leave the multinational company and join an Indian company, because by no standards, just by working in an Indian company is equivalent to serving the nation. He said, "Think how you can add value to the community with the knowledge and expertise that you are gaining through your work. Don't stop where it is enough to earn your salary. It is from there onwards that you start serving your motherland." So let us all pledge to take up service sans desire towards the society, our nation, and the world at large. Jai Hind. A very, very happy Independence Day 2020 to all of you. Thank you. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठों से राष्ट्र वंदना करेंगे कोटि कोटि कंठों से राष्ट्र वंदना करेंगे वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जाति पंथ का भेद भूल कर सब मिलकर उद्धार करेंगे जाति पंथ का भेद भूल कर सब मिलकर उद्धार करेंगे कांप उठे शत कोटि कोटि जन ऊंचे स्वर से गाएंगे कांप उठे शत कोटि कोटि जन ऊंचे स्वर से गाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम भाषाओं का मोह मिटाकर सिंह की ज्योति जलाएंगे भाषाओं का मोह मिटाकर सिंह की ज्योति जलाएंगे गूंज उठे जय भारत नारा एक भाव से गाएंगे गूंज उठे जय भारत नारा एक भाव से गाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठों से राष्ट्र वंदना करेंगे कोटि कोटि कंठों से राष्ट्र वंदना करेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम India was free in 1947 from the British colonists.
though we lost many men and women who were filled with undaunted spirit of patriotism. There were many freedom fighters who fought for one nation, India, and sacrificed their life for long independence and peace. While freedom in India was brought by the efforts of millions, we often miss to remember the famous and few freedom fighters. Today, we, the young blood of BGS IRS, remember and pay a tribute to the unsung warriors of our. We have received news that 44 CRPS soldiers have been killed in Kashmir as a convoy was attacked. So far, 3 groups are responsible. As usual, Pakistan covering behind the attack. And the traitors who launched the attack from inside Kashmir. And the third being the anti-nationalists that plague our country with their justification of murder, of the murder of our brothers and sisters. 44 of our soldiers have been killed. And I ask when Prime Minister Narendra Modi will retaliate. Not if, when he does. Our whole nation will stand solid as a rock, united against this evil. Giving the evidences to Pakistan will have to be a continuous process because it has to be proven over and over and again as many number of times that their involvement is there for everybody to see it, and the evidences will only strengthen that argument. So giving that does not deny us our right to respond adequately and at a time which we think fit. Pakistan will pay for this misadventure. I repeat it, Pakistan will pay for it. इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। In a mere 12 days after the Pulwama attack, the Indian Army has gotten its revenge. In the span of 17 minutes, the Air Force took out 3 terror camps in 3 airstrikes.
taking out a total of 245 terrorists. When two countries fight wars, both sides are fighting to win, because in war, there are no runners-ups. This showcase of our army's might has left Pakistan more clueless than ever. So let us not lament the death of our soldiers killed in the battlefield, as those who sacrifice their life in wars are honored in heaven. India has struck back. Jai Hind. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं, सारे यूनिफॉर्म फोर्स, उन्होंने जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। चाहे एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे हमारे भीतर कठिनाइयां पैदा करने वाले तत्व हो, हमारे देश के इन यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने बलिदान की पराकाष्ठा की है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये साफ है कि हम देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, आंतरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। समंदर हो या सीमा हो, साइबर हो या स्पेस हो, हर प्रकार की सुरक्षा भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश के खिलाफ कुछ भी करने वालों के हौसले पस्त होने के लिए हम ताकतवर हैं। भारत माता की आवाज दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। An unsung hero remains in the shadows and plays out a part that mostly goes unnoticed, but the fruits of which are certainly enjoyed by everyone unpaid. They give their moments of today for our better tomorrow and yet remain unrecognized. They are the pride of every Indian soul whose selfless sacrifice, dedication, and stories of valor should not go unpraised, especially when we celebrate our independence. Hence, this was our very humble attempt to reflect upon the gallant lineage of those unacclaimed army men, the real heroes, which otherwise is not brought forth in many instances. लोग तो यूं ही डरते हैं, ये भी विडंबना ही है। कुछ मर मर के जीते हैं और कुछ मर के जी जाते हैं। है मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी की आरज़ू। नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
कमांडोस, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How is the Josh? High, sir. How is the Josh? High, sir. I said, how is the Josh? High, sir. Good. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सबसे आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियन की पावन धारा है, मंगल माला गंगा की, गंगा की, गंगा की। कमर बंद है विंध्याद्री का, सात पुड़ा की श्रेणी की, श्रेणी की, श्रेणी की। सह्याद्री का वज्र हस्त है, पौरुषता पहचाने हम। सह्याद्री का वज्र हस्त है, पौरुषता पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम।
मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का हरियाली साड़ी पहनी माँ गीत तुम्हारे गाए हम हरियाली साड़ी पहनी माँ गीत तुम्हारे गाए हम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है जो हमसे टकराने आते मिट्टी में मिल जाते हैं तेरा वैभव सदा रहे माँ खत्म करेंगे दुश्मन हम तेरा वैभव सदा रहे माँ खत्म करेंगे दुश्मन हम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम
Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Hi, happy Independence Day to all. Yeah, shall we begin with the first song? Yeah, we'll start. Guess the song. Yeah, second song. Begin with the third song. Fourth song.
Yeah, fifth song. Sixth song for you. Seventh song. We'll begin with the eighth song. Ninth song for you. Guess the song. Last song. Thank you guys. That's it for today. Hope you guys are enjoying. And once again, happy Independence Day to all. See you all. Bye bye.